for practice on sinking fund also. And nothing, Karthik, we were just discussing about the examination and all. Okay. So yeah. So now I'm saying that we are today going to start with conversion. So if you remember when we talked about debentures and all, how do you redeem debentures, methods and sources, if you remember, one of them was conversion. So this here, if you see here, all of you, we've done out of capital, we've done out of profit, and now we are talking about conversion. So if you have convertible debentures, there is a possibility that you can convert your debentures into shares. So rather than actually redeeming your debentures, you are converting them into shares. That's what in simple words happening. Just a few things is obviously if you are converting, the simple entry that we talk about is going to be something like this. So debentures are technically, so to say, being redeemed and you are being issued share capital. So if you're issuing it at par, then it's a simple entry, that is debentures to share capital. But if you are issuing it at a premium, then this will be the entry. While on the other hand, there is also a possibility, let's say you have debentures on a discount. Now, since see if you're redeeming or converting it on the date of maturity, then it's fine. Whatever is the discount, you would have written off that discount. But on the other hand, if it is given in the question that your debentures are being redeemed before the date of maturity, please keep that in mind. I am saying before the date of maturity, which means and your debentures were issued on a discount. So this discount would not have been written off. Now, since this would not have been written off, so what we are doing is we are passing a reverse entry. What is the reverse entry? That is debentures to discount on issue of debentures. This is actually an additional point that we have to keep in mind. So we'll have to see that when are the debentures being converted or redeemed, so to say. So for this, I mean, pretty much these are the entries. So usually, I mean, as we go further, you're going to have a combination. Like they're going to ask you that, okay, this much amount was converted and this much was redeemed and so on. So there will be certain entries that you will have to do. So for this, we will first do one question here and try to understand that what kind of questions are you going to get. Okay, so this is illustration 15, all of you, please read it. You have 5 minutes time. I'm also reading it. You also read it, please. And then I'll ask you small questions, okay? I have read it. If you've read it, just let me know, then we'll start. Can we start? Okay. So my first question here is, if you read the question, tell me that how much debentures are to be converted here. I repeat, how much debentures are to be converted here? Yes, anyone? Debentures that are to be converted. बोलो जी. मैम आप क्वेश्चन पढ़ सकती हैं क्या? हाँ, मेरा अच्छा, बुक नहीं है? मैम मेरा बुक आज मेरे फ्रेंड लेके गया, वो अभी तक आया नहीं. अच्छा ठीक है. So on 1st April 2017, अंजू लिमिटेड. अच्छा, बाकी अगर कोई है किसी के पास बुक है तो एक पिक्चर भी भेज दो चैट बॉक्स में, मैं तब तक पढ़ रही हूँ. On 1st April 2017, Anju Limited issued 2,000 12% debentures of 500 each at 475 rupees each.
to be redeemed on 1st April 2020. Debenture holders had an option to convert their holding into 13% preference shares of 100 each at a premium of rupees 25 per share. On 31st March 2018, 1 year's interest had accrued on these debentures and remained unpaid. A holder of 100 debentures notified his intention to convert his holding into 13% preference shares. Journalize the above transactions and draw the balance sheet as at 31st March 2018 showing the relevant items. Yes. So can someone tell me how many debentures are to be converted? Or how much amount of debentures are to be converted? Just hold on, all of you. Yes, so what is the amount of debentures that can be converted? I think someone has written something in the chat box. Let me just, yeah. Right. Okay, so 100 debentures are going to be converted. Right, that's correct. So let's start from the very beginning. Since what is happening is they have told us to journalize all the transactions. The first thing that we are noticing here is, let me start from here. Yeah, so he says on 1st April 2017. I told you dates are important. So 1st April. Happening is Anjo Limited issued 2000 12% debentures of 500 each at 475 each to be redeemed. Now tell me the issue entry, anyone? What will be the issue entry? I'm just waiting. बैंक अकाउंट डेबिट मैम डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू डिबेंचर अमाउंट बताओ मीनाक्षी बच्चे. मैम 9,50,000 or 50,000 or 10 lakh. Any doubts to anyone? So we have issued 9,50,000. Is it correct? Yeah, 50,000 and 10 lakh. So we have issued first. Okay, now let's go on and see what is to be done. Then he says there is an option that you can actually convert it into preference shares, but please note it is at a premium of 25. So if you are going to convert it, first thing is that he says there will be a premium, that means 125, right? At the rate of 125, you're going to convert it. Now, the other thing that he's saying is on 31st March 2018, 1 year's interest had accrued on these debentures. We can calculate whatever is 1 year's interest, that is on 10 lakh, that is 1,20,000, but it has not been paid. Since this has not been paid, so we go here, 2018, 31st March. We know it's 1,20,000, so the interest is venture interest 1,20,000 to accrued interest. That is 1,20,000. Okay. Now, what is he saying? He's saying a holder of 100 debentures notified. So please note, all of you, you have to be very careful कि 100 debentures के holder ने notify किया है कि, just hold on. Aru, good morning. Yeah, so
ओनली 100 डिबेंचर्स के होल्डर ने नोटिफाई किया कि वो ये कन्वर्जन लेगा. Now since we know that 100 debentures into 50, somebody said that comes out to be 50,000, right? But now here there is also one thing, that these debentures were actually issued at a discount. If you notice the question, in the question it said, yeah, 25 is the discount. So 25 into 100 becomes 2500. So actually 50,000 minus 2500, that is this. These are the proceeds that you have from the issue of the debenture, and to him you have to now convert the debentures into preference shares. Just hold on. Excuse me. Yeah. Now we have just calculated that these preference shares are to be converted at what? At the rate of 125. So how do we calculate that is very important. That is this much divided by 125. This becomes 380. That means you have issued 380 preference shares. Now, when you're going to redeem, please note debentures. The debentures that you're redeeming, you have just calculated, is of 50,000. Now you are redeeming it. That is, you're converting it into how much preference share? 13% preference shares. 13% preference shares. What will be the amount here? Anyone? What will be the amount here? 13% preference share. 380 shares, ma'am, 100. Yes, 338,000 हो गया फिर. Now, if you remember, there is a premium also. So, to securities premium. And that is, how much will be the premium? We know that the premium is 25 rupees. This much, I think. Let's calculate that. So, it is 9,500. What else? There is one more very important point that I told you in the beginning of the class. क्योंकि ये तो मैच हो नहीं रहा, आपको दिख रहा है ये 38,000 है, 9,500 है, बट टोटल है 50,000. ये मैच क्यों नहीं हो रहा है? एनीवन? व्हाट इज द रीजन? कैन एनीवन टेल मी? ओके, लेट मी रिपीट. आई सेड, क्योंकि मैम हाँ मीनाक्षी बोलो बोलो. हमने इशू डिस्काउंट पे किए ना मैम. यस, तो हमें वो अमाउंट जो है वो यहाँ डालना होगा. राइट ऑफ. तो ये है टू डिस्काउंट ऑन इशू. अब ये डिस्काउंट का अमाउंट कितना होगा ये बताओ मुझे. एनीवन? मैम 2,500. राइट, बिकॉज इट वाज 250 था. कितना था? 250 था नहीं, 25 था. 25 into 100. So this is the calculation. Just a minute, let me show you. ये आ गया आपका 2500. Any questions? Clear है इतना? Okay. This was done. Please note, यहाँ पे डेट चेक करेंगे हम. इसने बोला है कब करना है, ये भी 31 मार्च 2018 पे करना है, तो ये सेम डेट पे होगा ये एंट्री. What else? Now we notice, please notice that मैंने आपको पहले भी कहा था, जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है वो आपका P&L में चार्ज होगा. दैट इज स्टेटमेंट. जस्ट होल्ड ऑन, आप चप्पल पहन लो, कांच टूट गया था. Just give me 2 minutes, all of you, 2 minutes. Huh?
Yeah, sorry about that. Okay, so let's start. I was here. Now, like I said, statement of P&L, and yeah, I just wanted to tell you one thing. Since इसके बाद हम final accounts करेंगे, so you know now we rather than referring it as profit and loss and all, it is preferred, and rather this is the, you can say, the new name. We use the term statement of P&L. तो अगर आप entries भी कर, वैसे entries में फिर भी allowed है, but जब हम P&L account बनाते हैं तो we call it statement of P&L. तो entries में भी थोड़ा आप careful रह सकते हैं. Okay, so this is statement of P&L. And since it is the debenture interest, you will debenture interest, which comes out to be how much? That is 1,20,000. Right. Okay. Besides this, what else is required? Anyone? Can you tell me? इसके अलावा और क्या करना है हमें? देखो, अब क्या करेंगे हम? हमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, इफ यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम भी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स तो राइट ऑफ करना ही है, और मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है मेरे पास कितना? 9,500, and hence I can write off the discount on issue of debentures. Discount on issue of debentures. Is this clear? Right. This is how we are going to do it. Okay. Okay. Any questions? Any questions? Now, please note, यहाँ पे आपको कुछ और भी पूछा. I think they have asked you to make the balance sheet also. So please note, I will just tell you from here. From here, share capital. You have 38,000 share capital that you will share. You also have, if you note, the reserves and surplus. Yes. Can anybody tell me what will be the amount of reserves and surplus that we will show in the balance sheet? Anyone? तो बता सकते हैं reserves and surplus कितने शो होंगे बैलेंस शीट में? बोलो भाई. Any guesses? What will be the amount of reserves and surplus? देखो जरा. देखो यहाँ से दिख रहा है मुझे स्टेटमेंट ऑफ P&L में मुझे दिख रहा है एक तो 1,20,000 रिजर्व्स एंड सरप्लस में, एंड देन सिक्योरिटी प्रीमियम तो कैंसिल हो गया मेरा. ठीक है, सो आई डू हैव 1,20,000 हियर. एनी अदर दैट आई हैव, कैन जस्ट चेक. No, it's 1,20,000 only. So that will be 1,20,000, but in negative. Okay. Then after that, are we going to show any debentures? Yes. 9,50,000 of debentures are still to be shown in the balance sheet. And if we see at the asset side, there is something known as cash and cash equivalent, because you have got 9,50,000 plus there is certain amount that I will be showing in other current assets. Can anybody tell me what is the amount of other current assets? What is this amount of other current assets? Any guesses? Other current assets में क्या show करोगे? जितना डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 9,500 राइट ऑफ हुआ है, जबकि एक्चुअली मैं यहाँ पे क्वेश्चन देखूं तो मेरा डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना है चेक करो, और उसमें से 9,500 माइनस करो. सो दैट अमाउंट विल बी शोन, दैट इज टू बी शोन. ओके, ठीक है. सो दैट्स इट. एनी क्वेश्चन? आगे चल सकते हैं. कैन वी गो ऑन द अदर क्वेश्चन प्लीज? If there is any doubt, please ask, क्योंकि मैं conversion का ही next question कराऊंगी. Let me check which question shall we do. Come interest we haven't abhi done. We will do it maybe tomorrow or day after tomorrow. So not doing that. I think we can do this one. Okay. Any question? No? Okay.
So what is happening is, now what we have done is, we'll come to another concept now. What we have done is conversion. We've understood two things. One is that when you're converting the debentures into, let's say, preference shares or so, depending on whether you are doing it on a premium or so, you will do the calculation. Secondly, if you have issued the debentures on a discount, then whatever that discount amount is, and you are actually redeeming before maturity, then you have to do a reverse entry, since all the discount has not been written off. Clear? Okay. Now let me come to another concept, and this concept is concept of own debentures, or let's say, let me call it purchase of debentures for immediate cancellation. अब देखो दो टाइप्स हो सकता है. क्या दो टाइप्स है? एक तो टाइप है कि मैंने अपने ही डिबेंचर्स खरीदे, मतलब एज अ कंपनी आई बॉट माय ओन डिबेंचर्स, which means technically अगर आप देखो that I have bought the debentures, this means जो जिसके debentures थे वो तो redeem हो गए एक तरफ से, एक तरह से, और मेरे पास debentures आ गए. Okay, later you can have, yeah, and I have got these debentures, right? Purchase of own debenture, we also call it own debentures, but इसमें क्या है, दो चीजें होती है. एक होती है कि इमीडिएट कैंसिलेशन हो जाती है, और दूसरा होता है कि हम ओन डिबेंचर्स खरीदते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. नाउ सिंस वी आर बाइंग इट, प्लीज नोट, व्हेन वी विल बाय द डिबेंचर्स, व्हाट विल बी द एंट्री? मैंने डिबेंचर्स खरीदे, डिबेंचर्स, राइट? I buy the debentures and now the question here is, let's say 5 लाख के debentures हैं, लेकिन मैंने debentures खरीदे 4,50,000 में. So मुझे profit हुआ या loss? Anyone? Can you tell me? 5 lakh के debentures है, but I have bought it at 4,50,000. Is it a profit or loss? Anyone? I repeat, 5 lakh debentures, I have bought it at 4,50,000. I have a profit or loss? Bhavna, can you tell me? Chat box में लिख दो भावना, बहुत शोर है. Okay, someone has written in the chat box. Meenakshi, Karthik is saying profit, right? So profit. So which means that मैं यहाँ पे आपको एंट्री बता रही थी कि भाई मैंने खरीदा, ये तो था नॉर्मल, अगर मैंने 5 लाख का खरीदा होता तो मैं एंट्री करती डिबेंचर्स टू बैंक. Now let's say I have a profit if I have bought it, which means let's do this entry only जो मैंने अभी आपको बोली, डिबेंचर्स कितने के हैं? 5 लाख के, and to bank, that is मैंने खरीदे 4,50,000. ठीक है? Now see, 50,000 का डिफरेंस है, तो मुझे पता है यहाँ मुझे कुछ करना पड़ेगा, यहाँ मुझे कुछ डालना पड़ेगा. मैं क्या डालूंगी यहाँ? एनीवन? Actually the profit, इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, but then just to make you understand मैं आपको बता रही हूँ, to profit on redemption of debentures. Now please note, अगर ये प्रॉफिट ऑन डिबेंचर्स है, इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये कैपिटल रिजर्व में ही जाएगा ऑब्वियसली, तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते थे आप, बट जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू यू आई हैव डन इट दिस वे. इसको नेक्स्ट में मैं ऐसे कर सकती हूँ, दैट इज प्रॉफिट ऑन redemption of debentures to capital reserve. So this becomes 50,000. Now उल्टा भी हो सकता है. Let's say 5 लाख के डिबेंचर्स है, बट मैंने 5,25,000 के खरीदे. So obviously इसी एंट्री को उल्टा कर देते हैं, that is डिबेंचर्स, और ये है आपके 5 लाख के, बट आपने खरीदे कितने के? 5,25,000 के. That means यहाँ पे कुछ आएगा, that will be loss on redemption of debentures. So this is 25,000 and this becomes to bank 5,25,000. This is 5,25,000. ठीक है?
Now the question is, अगर आपका लॉस है, so if you remember, लॉस को हम करते हैं राइट ऑफ, तो मेरा 25,000 का लॉस है, depending on what do I have. If I have certain security premiums, I can write off from security premiums. If I don't have, then I can use, or maybe if I have certain capital reserve, I will use that. Or if I have any security premium, I can use that, or then maybe other surplus. So let's say capital reserve, अगर loss है, securities premium, loss on redemption of debentures. Is this clear? Any question? Any question that you have, please ask. ठीक है? Okay. So what is happening here is, please note, there are two things. One is that what we are doing, we are purchasing our own debentures. We might be purchasing our debentures at a profit. We might be purchasing at a loss. In case we are purchasing it at a profit, that goes to the capital reserve. In case we are purchasing it at a loss, that will have to be written off from capital reserves and security premiums first. Okay, this is what is happening. Now they have also said that there is also a possibility that this is the case when you have, when you do not have the sinking fund. There can be another case where you have sinking fund or DRF, that is debenture redemption fund, that exists. What is going to be different in that case? So let me just write down sinking fund oblique DRF exists. Okay. Now what I am doing is, and please note, I am going to repeat for you, this is the case of immediate cancellation. इसके बाद हम own debentures की बात भी करेंगे. मतलब immediate cancellation का क्या मतलब है? मतलब मैंने डिवेंचर्स खरीदे, इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उसकी रिडेम्पशन हो गई. उससे खरीदा, उसको पैसा मिला, उसकी रिडेम्पशन हो गई. तो इसे कहते हैं हम इमीडिएट कैंसिलेशन. इसके बाद मैं ओन डिवेंचर्स की बात करूंगी. ओन डिवेंचर्स का क्या मतलब है? भाई मैंने अपने ओन डिवेंचर्स खरीदे, एज एन इन्वेस्टमेंट उसको रखा, एंड एट अ लेटर डेट उसको कैसे हम ओन डिवेंचर्स दिखाएंगे? वी यूज द टर्म ओन डिवेंचर्स एज अगेंस्ट डिवेंचर्स. आई विल शो दैट टू यू, बट अभी मैं सिर्फ इमीडिएट कैंसिलेशन की बात कर रही हूं. ओके, सो दिस इज अबाउट immediate cancellation. Let me, I think, bold it. Right. Now let's talk about अगर आपका sinking fund है. So if you remember, मेरे पास fund है, let's say, तो मैंने उसको sale किया होगा. On the sale of that investment, जो मेरी sinking fund investment आ रही होगी, again there can be loss or whatever, there can be a profit also. If you remember, we did this. हमने entry करी आपका debenture redemption fund, या इसको आप sinking fund भी कह सकते हो, टू DRI, आपने जो इन्वेस्टमेंट बेची और आपके पास इंटरेस्ट भी आता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट. ये मैं दोनों इकट्ठे कर रही हूँ. क्यों कर रही हूँ? आई विल शो यू. ये जो है ये क्या है? लॉस है, ये लॉस ऑन सेल ऑफ RFI, और ये क्या है आपका अगर प्रॉफिट है? सो दैट विल बी प्रॉफिट ऑन sale of DRFI. ठीक है, क्लियर? सो द डिफरेंस हियर इज, वहां क्या हो रहा था? सीधा आपका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में जा रहा था. यहाँ क्या हो रहा है? आपके पास डिवेंचर रिडेम्पशन फंड है. ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट जो है आपको पता है उसका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो वहां जाता है, इंटरेस्ट भी वहीं जाता है. सो दिस इज व्हाट द एंट्री दैट यू आर डूइंग. देन यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बाइंग और परचेजिंग डिवेंचर्स. व्हेन यू परचेज द डिवेंचर्स, अब क्या हुआ? आपने अपने डिबेंचर्स खरीदे टू बैंक. अब दो चीजें हैं, देखो यहां था इमीडिएट कैंसिलेशन, यहां हो सकता है आपको बोले कि पहले आपने खरीदा एट अ पर्टिकुलर डेट, जिस डेट पे आपने खरीदा तो वो तो एज अ एसेट आपके इन्वेस्टमेंट में शो हो गया, और लेटर ऑन एट अ लेटर डेट आपने उसको रिडीम किया. So there will be two entries. वहां क्या हुआ? इमीडिएट कैंसिलेशन हो रही है, तो इसलिए आपने डिवेंचर टू बैंक की एंट्री की. बट यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे पहले आप खरीद रहे हो, उसको एज एन एसेट दिखा रहे हो, एंड देन जब डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे हो जिस डेट पे, वहां पे आप एंट्री कर दो परसेंटेज डिवेंचर्स टू कैंसिलेशन कर रहे हो ओन डिवेंचर. अगेन नोट, जो भी आपका लॉस है प्रॉफिट है वो यहाँ पे आ जाएगा, लॉस ऑन
कैंसिल ऑफ डिवेंचर्स और यहाँ पे जो भी आपका प्रॉफिट ऑन नाउ जो भी प्रॉफिट है हुआ वही, अल्टीमेटली हुआ वही, क्या जो प्रॉफिट था अगर तो वो आपने कैपिटल रिजर्व में डाल दिया, मैं डिटेल नहीं लिख रही पूरा होके, टू कैपिटल रिजर्व, और अगर लॉस है अगेन द सेम एंट्री, कैपिटल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम से आपने राइट ऑफ कर दिया। बट अब आप बोलोगे मैम फर्क क्या है? फर्क ये है, दो चीजों का फर्क है। एक तो पहली एंट्री का फर्क है, यहाँ पे जब आपने इन्वेस्टमेंट डीआरएफ की सेल करी थी तो ये एंट्री का फर्क है, और एक लास्ट एंट्री का फर्क है। अगर आपको याद हो हमने क्या बोला था कि जब हमारे पास डीआरएफ होगा या एसएफ होगा तो हम उसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे? एट द एंड जो भी बैलेंस होगा जनरल रिजर्व में। सो वो भी एक एडिशनल एंट्री मेरी आ जाएगी, दैट इज डीआरएफ या फिर एसएफ टू general reserve. Yes. Any question? Is this clear? Let me see if we can do a question on this, or if I should tell you the own debenture point also. Just let me check. Huh? Just check. I think we can do this one. But this may offer to converting to at 96 each. And own debentures. Yeah, we can do this one. Cancelled its own debentures held as investment. Okay. I think इसके लिए मैं एक चीज और बता देती हूँ आपको, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि भाई इफ यू आर होल्डिंग इट एज एन इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल ये एंट्री है अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर इन्वेस्टमेंट in own debentures. Now what is happening here is I am buying the debenture, so the asset is own debenture to bank. ये मैंने खरीद लिया, ठीक है। अब आप प्लीज नोटिस करो, मेन चीज आपको यही नोटिस करनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप ओन डिबेंचर्स खरीद रहे हो, ठीक है। और अगर सिंकिंग फंड इन्वॉल्व है, अगेन द एंट्रीज विल बी, सारी की सारी एंट्रीज सेम होंगी। कैसे? अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको समझ आएगा कैसे आएगा। लेट्स सी, कम टू इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक 7, no not 17, let's do 18. Yeah, we'll see इसमें कुछ, hopefully I've told you everything. We'll see illustration 18 now. Please read. All of you read. When you're done, just raise your hands. I'm waiting for you to read. I'll also read. Actually, it's a combined question. इसमें preference share भी redeem किया हुआ है, debenture भी किया है. We can stick to debenture if you want. We'll see that. Okay. Just let me know when you're done. I'm waiting. Are you ready? Please raise your hand when you're ready.
Are you ready, all of you? Please let me know. I'm waiting. कहाँ हो सब भाई? गायब हो क्या आज? Bhavna, okay. All right, Bhavna, let me share now. So let's start. Okay. See, सबसे पहला point कहता है, on the above date, the directors of the company took following steps to redeem 8% preference shares and 10% debentures, both at a premium of 10%. ठीक है? The company cancelled its own debentures held as investment. Balance sheet देखिए, asset side पे लिखा है investment in own debentures 18,000, but face value है 20,000. So जब आप इसको क्या कर रहे हो, वो कह रहा है कैंसिल कर दी उसने ओन डिबेंचर. तो ओन डिबेंचर थी उसकी 10% की डिबेंचर्स 20,000 के. So we wrote 10% debentures 20,000 to investment in own debentures at 18,000 and whatever is the difference face value और इसके बीच में 2,000 का वो मैंने डाल दिया as a profit to capital reserve. Now the second thing he's saying that I know in the balance sheet there are 2 lakh के debentures मेरे पास हैं, 2,20,000 के debentures मेरे पास हैं. So it is saying the company offered to debenture holders option to convert their holding into new 12% debentures of 100 each at 96 each. 60% of the debenture holders exercise the option of conversion. तो उन्होंने अपने debentures नए debentures में convert कर दिए 60% ने. ठीक है? The remaining debentures were redeemed for cash. मतलब total debentures redeem होने हैं. तो मतलब due amount कितना है? 2 lakh, 20% का premium to debenture holder. To debenture holder. This is 2 lakh. Now let's see, 60% convert किया है. Now 60% of this much I see is 1,20,000. 60% of this much I see is 12,000. So it means that क्या करूंगी मैं? Debenture holder को, debenture holder तुम्हारा है 1,32,000. ठीक है, इसको कन्वर्ट करी हूं कितने डिबेंचर्स में? टू 12% डिबेंचर्स. प्लीज नोट, लेकिन वो डिस्काउंट पे है 96 ईच. अभी दिख जाएगा. टू 12% डिबेंचर्स. Now see, this is 100. Can you calculate anyone? If this is equal to 100, then 96 कह रहा है means 4 का डिस्काउंट है. तो डिस्काउंट कितना होगा और ये कितना होगा? I am going to stop sharing my screen and I am going to wait for you to answer and tell me the amount of discount. Yeah, please do it. हाँ जी, थक गए तो नहा लेना ना इसके बाद. पंप नहीं ना. Just hold on. ना बस इसे भी कर दो, इस पर भी हो सकता. Yes. थके नहीं आप? नहीं, अब तो रहते हैं ना. Okay. Yes, please tell me. Can someone tell me how much? So you have understood it. I have calculated. I am ready. I'm waiting for you to answer, all of you. Anyone?
How about you, Bhavna, Meenakshi, Karthik? Can you tell me the amount of discount, please? हाँ या नहीं बोलो, नहीं आ रहा तो ये भी बोलो मैम नहीं आ रहा, आप बता दो. Yes, anyone? Mahima, Nikita, Meenakshi, Karthik, what is the amount of discount? सब गायब है आज मुझे लगता है. Okay, let me show you. Oh no, not this one. Can you see this? No, let me share. Yes, this one. So here, क्या बोला था मैंने आपको? I said, see this the formula here. That मुझे पता है ये debentures कितने हैं? 96 के equal है. तो unitary system 1,32,000 divided by 96 into 100 comes out to be 1,37,500. So automatically the difference is discount, that is 5,500. Okay. Now what is he saying? He saying 60% of debentures exercise the option of conversion. वो हमने कर लिया. 40% बच गए जिनको मुझे क्या देना है? Cash देना है. Are to be redeemed in cash. Now tell me how much is the 40%? ये अमाउंट कैलकुलेट करना है. 2 लाख था. 2 लाख माइनस 132, that is, oops, sorry, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे. हाँ 68,000 है जिसमें प्रीमियम भी है. एग्जैक्टली. सो 68,000 मेरे डिबेंचर्स हैं और कितने का प्रीमियम है? वी हैव द प्रीमियम आल्सो. आई थिंक कितने का? डायरेक्टर्स टू रिडीम डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन. देखो जरा कितना है प्रीमियम. या 68,000. कितना पे करना है इसको? डिबेंचर होल्डर टू बैंक. देखो 2 लाख के थे आपके तो 12,000 था ना. एक्चुअली इसमें 12,000 और ऐड 80,000 तो 88,000 हो. सो दिस इज 88,000. 80, right? That's it. Now the total premium that I have, please note in the balance sheet they have given a reserve, that is debenture redemption reserve of 2 lakh. 2 lakh का debenture redemption reserve उसने दिया है हमें already. Now this is, और हमारे पास premium on redemption भी है जो कि आ रहा है 20,000 के equal. So this premium debenture redemption reserve से मैं adjust करूंगी, that is to premium redemption. Right? बच कितना गया? 1,80,000 बच गया. So DRR to general reserve 1,80,000. And then it says the company issued 8,000 equity shares at 1 per share for the purpose of redemption of preference shares. So मैंने issue किए हैं 8,000, that is bank to equity share, capital to premium on, or to security premium I'll say. This comes out to be कितना है? 8,000 and 80,000 and 8,000, right? 80,000. 8,000. This is 88, right? All the payments were made. All the payments were made to the preference shareholder except those holding 60 shares who could not be traced. So let's see the preference shareholders in the balance sheet. We have preference shareholders of how much? 2 lakh. So due amount is on 2 lakh. That is 8% preference share capital. 2 lakh. And is it on a premium? Let's check. कहाँ लिखा है आपका? preference share 10% premium है. 20,000 premium on redemption. Preference shareholder, that is 2,20,000. अब
जब आपको क्या करना है, इफ यू रिमेंबर, यहाँ कोई न्यू इश्यू नहीं है, हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट करते हैं. सो CRR मुझे टोटल 2 लाख का क्रिएट करना पड़ेगा या कितने का करना पड़ेगा देख लेते हैं. क्या मेरे पास कोई प्रॉफिट है, यहाँ पे हम चेक करते हैं. वी हैव द प्रॉफिट, यस वी हैव अ जनरल रिजर्व 80,000. सो 80,000 का जनरल रिजर्व एंड 1,20,000 मैं यहाँ पे CRR से कर सकती हूँ. सॉरी, CRR तो मुझे क्रिएट करना है ना, जनरल रिजर्व टू CRR. यस, कितना है, लेट्स सी. वी हैव जनरल रिजर्व 80/20. एनी अदर अमाउंट दैट वी हैव गॉट इन जनरल रिजर्व? हाँ, जनरल रिजर्व मेरे पास अभी और भी आया है 1,80,000 का, और 80,000 का ऑलरेडी भी है. सो यस, 80,000 का ऑलरेडी ये वाला है मेरा. कहाँ गया जनरल रिजर्व? ये रहा. तो पूरे 2 लाख का ही क्रिएट कर देंगे जनरल रिजर्व हम यहाँ से, 2 लाख का. सिक्योरिटी प्रीमियम में से मेरा प्रीमियम कितना है, 8,000 का, और 20,000 यहाँ है, ये राइट ऑफ कर सकती हूँ. 20,000. फाइनली अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर विल बी पेड. लेकिन यहाँ जब आप पे करोगे तो आपको एक चीज देखनी है कि 600 कितने, 60 या 600, 60 आई थिंक. ऑल पेमेंट्स वर मेड टू प्रेफरेंस एक्सेप्ट दोज होल्डिंग 60. दैट मींस 1940 को आपने पेमेंट करनी है. तो दिस विल बी 1940 into 213,400. ठीक है, all of you? Is it clear? Yeah. So this is a combined question of redemption of preference shares and redemption of debentures. This was illustration 18 that we have done. Now what we'll do is, I think I shall, maybe if possible, I can give you some homework, and then tomorrow we will start with come interest and so. You can do, just give me a minute, I'll tell you which question to do. Yeah, I think you can do illustration 19. Yes. You can do illustration 19, and tomorrow we will start with come interest and X interest. Okay, any questions? Fine, so please do homework illustration 19, and tomorrow we're going to start with come interest and X interest. Anybody has any